Hello students. In this lecture we are going to discuss about CSTR, that is continuous stirred tank bioreactor. The points which we are going to discuss under CSTR is a design of CSTR, general introduction about the bioreactor and working of CSTR. Means overall we are going to see overview of continuous stirred tank reactor. Let's start with it. First of all, what is bioreactor? In earlier video, we have already discussed about the difference between bioreactor and fermenter. These both are interchangeable term. But there is slight difference between fermenter and bioreactor. This bioreactor is used for culturing all types of cells like microbial cells, plant cells, mammalian cells, etc. While fermenter is very specific, which is used for culturing of microbial cells. Okay, if we will see the design of the bioreactor, then it is a closed vessel system made up of stainless steel, which is used to carry out certain chemical reactions. Bioconversion reactions are being carried out in the bioreactor, and finally there is formation of the product. Okay, so this is all about the bioreactor, and the parts are same as that of the fermenter. In CSTR, we will see the design and the parts of the continuous stirred tank reactor. Now CSTR, if we will speak, what is CSTR? As the name indicates, continuous. Continuous means here continuously the nutrients are being added and there is formation of the product. So the name is given continuous. Stirred. Stirred stands for the mixing. Here mixing has been provided. The role of agitation, the role of mixing plays a wide role in this continuous stirred tank reactor. Tank, it is the tank type of the fermenter, so the name is given tank, and reactor as it is the bioreactor, so the name is given reactor. So by combining these four words, it forms continuously stirred tank reactors. Okay, in this reactants and products are continuously added, means reactant or the nutrients is been continuously added and the product is continuously withdrawn. Okay, so the name is given CSTR. It is also called as the steady state reactor. Okay, CSTR को ही क्या बोला जाता है? Steady state reactor. The reason behind this is due to there is the steady formation of the product, means how much amount of the nutrients or reactant is been added, that much amount of the product is been formed. Here steady state is been achieved, so the name is given steady state reactor. Okay, so here microorganisms grow within the reactor continuously as the substrate is been added, and it results into the formation of the product. Okay, so this is just main important that here continuously substrate has been added and continuously product has been withdrawn to maintain the steady state, isn't it? Here the main important thing is about the agitation, about the mixing. Here mechanical agitation is required to achieve the uniform composition or to achieve the uniform state. Okay, so that is the mechanical agitation. Now let's see the design of continuous stirred tank reactor, means parts of the continuous stirred tank reactor. Generally, it consists of agitator system, oxygen delivery system, foam control system, temperature control system, pH control system, sampling parts, and cleaning and sterilization system. And definitely outlet and inlet are being included, including this all the basic features of the CSTR. Now let's start with the agitator system. As first I told you about the agitator system, here agitation is very important. Agitator system, here mechanical agitators are used. Now why mechanical agitator are used? Why not normal agitators are not being used?
The reason behind this is to prevent the contaminants from entering into the reactor. Okay, mechanical agitator, it rotates in a very high speed, and definitely the motor is been there to adjust the speed of this agitator. So this mechanical agitator, it prevent the contaminants, other contaminants from entering into the bioreactor. So the agitator is most important. If I'll show you typical diagram of the agitator, let me draw the typical diagram of the agitator so that it will be easy to understand. So yes, this is the okay, this is the motor. Okay, at the top motor is been there. The straight line is the shaft of that agitator, and these two are the impellers, or we can say blades, okay, for the mixing. So this is the typical design of the agitator. See, at the, if you can see the diagram of the fermenter, जो center line दिखाई है वो center line is known as the shaft. ऊपर मोटर कनेक्ट की गई है और नीचे है blade, okay, that is known as the impeller. So this is the typical design of the just agitator. Let me erase it. Okay, so this is the typical design of the agitator. This impeller, it consists of 2 or 6 blades. There are different types of the agitator like open turbine, different types of impellers like open turbine impeller, disc turbine impeller, radial impeller, etc, etc. Let's talk about the open टर्बाइन इम्पेलर. ओपन टर्बाइन इम्पेलर, यहाँ पर जो ब्लेड्स होते हैं, इम्पेलर मतलब दैट इज नथिंग बट द ब्लेड. ओके, ब्लेड क्यों रिक्वायर्ड है? फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग. सो यहाँ पर ब्लेड फ्री होते हैं बोथ साइड से. ओके, एज द नेम इंडिकेट्स ओपन, सो द ब्लेड्स अटैच टू दैट शाफ्ट, they are free, so their name is given open turbine impellers. In disc turbine impellers, the blades are attached at the center of the disc. Let me show with the diagram. डिस्क टर्बाइन इम्पेलर में क्या होता है? ये सेंट्रल डिस्क होती है, ओके, और उसके साइड में ऐसे ब्लेड्स अटैच होते हैं. ओके, सो दिस इज द डिस्क turbine impeller. Okay, so this is commonly used which generates the radial flow, that is the disc turbine impeller. So like this, different types of impellers are being used in the CSTR. Okay, next is oxygen delivery system. Oxygen delivery system, it consists of the compressor and sparger. compressor क्या करता है? Compressor, it forces air into the reactor. It introduces the air into the bioreactor to carry out the fermentation process. और sparger क्या करता है? Sparger, it is used to break the air into the small bubbles. जो air अंदर आई है bioreactor के, उसे break करता है into the small bubbles. Okay, that is the sparger. जैसे इम्पेलर्स के डिफरेंट टाइप्स है, वैसे ही स्पार्जर के भी डिफरेंट टाइप्स है. लाइक पोरस स्पार्जर इज देयर, एज द नेम इंडिकेट पोरस, इट कंसिस्ट ऑफ द पोर्स. ओके, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं. सो इट्स नोन एज द पोरस स्पार्जर. नेक्स्ट इज द ओरिफिस स्पार्जर. This type of sparger, it is used in the small fermenter tank, or we can say small stirred fermenter, and it consists of the pipe like structure that is kept below the impeller in the form of the crosses. So that is the orifice sparger. Just keep in mind the function of sparger. It is used to break the incoming air into the small bubbles. So that is the oxygen delivery system. Third, I have told you about the foam control system. Foam control system, it is used to prevent the foam. Okay, अगर हम फर्मेंटर की डिज़ाइन देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ द हेड स्पेस, एंड द हेड स्पेस वॉल्यूम इज बीन देयर, एंड द वर्किंग वॉल्यूम होता है. ठीक है, अब जो वर्किंग वॉल्यूम है, वर्किंग वॉल्यूम ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी हेड स्पेस वॉल्यूम. वर्किंग वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है 70 to 80% ऑफ दी
फर्मेंटर वॉल्यूम। ओके, वर्किंग वॉल्यूम मतलब जहाँ पर आपका मीडियम होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। सो दिस इज द वर्किंग वॉल्यूम, जहाँ पर ओवरऑल फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरी आउट होती है एंड द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज बीन देयर। सो दैट इज द वर्किंग वॉल्यूम। और जो टॉप वॉल्यूम होता है जहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, दैट इज द हेड स्पेस वॉल्यूम। ओके, तो ये फोम कहाँ फॉर्म होता है? टू दी हेड स्पेस वॉल्यूम। तो आप फोम प्रिवेंट करने के लिए, फोम मतलब it is like a formation of the bubbles, so that is the foam. So to prevent the foam, anti foam agents are used. तो ये anti foam कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन है, वेजिटेबल ऑयल्स है। सो ऑयल इट गिव्स द विस्कोसिटी विच प्रिवेंट्स द फोम। ओके, तो ये एंटी फोम जो आप यूज करते हैं वो सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, आपने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, उसके हिसाब से आप एंटी फोम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेचर ऑफ द मीडियम। सेकेंड, प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द फर्मेंटेड टैंक। ओके, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है? ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने जो एंटी फोम ऐड किया है उसका कोई साइड इफेक्ट हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। ओके, दैट मस्ट नॉट ऑल्सो बी द केस। सो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट विच इज बीन प्रोड्यूस्ड इन द फर्मेंटेशन टैंक, प्लस एरिएशन रेट, राइट, आप कितना अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिएशन रेट। लास्टली इट डिपेंड्स ऑन दी हेड स्पेस वॉल्यूम, मतलब आपका कितना वर्किंग वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है और कितना हेड स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है, तो उस हिसाब से एंटी फोम एजेंट्स उतने अमाउंट में यूज किए जाते हैं। सो दैट इज द फोम कंट्रोल सिस्टम। Next, I have told you temperature and pH control system. Some sensors are being attached to the fermentation tank so as to regulate the temperature and pH of that medium. Okay, जो प्रोडक्ट को जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, वो ऑर्गेनिज्म को जितना टेम्परेचर, जितना pH रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उतना मेंटेन किया जाता है। ओके, so cleaning and sterilization system, and after completion of the this fermentation process, the cleaning is been done. After cleaning, overall fermenter is been sterilized. Okay, so that is the cleaning and sterilization system. Let's see the working of the continuous stir tank reactor. See, before seeing the working of CSTR, here what I have told about the agitation system वही दिखाया है इस पहले बॉक्स में। और इम्पेलर्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉटम एंट्री इम्पेलर्स होते हैं, टॉप एंट्री इम्पेलर्स होते हैं। बॉटम मीन्स योर इम्पेलर्स आर बीन अटैच्ड एट द बॉटम ऑफ द डिवाइस, और ये बॉटम इम्पेलर्स मेनली यूज किए जाते हैं फॉर द लार्ज स्केल इक्विपमेंट। ओके, मीन्स फॉर द इंडस्ट्रियल यूज द बॉटम एंट्री इम्पेलर्स आर बीन यूज्ड। द मेन थिंग ऑफ दिस बॉटम एंट्री इम्पेलर्स इज it prevent the whatever the जो contamination होता है। okay, the as the mechanical agitation has been provided, so it prevents the contaminants from entering into the bioreactor, as I have told. So that is the bottom entry impellers. The diagram has been shown, it is completely attached at the bottom of the fermenter. So that is the, और bottom entry impellers क्यों दिखाए? क्योंकि CSTR में bottom entry impellers ही फिक्स किए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं। ठीक है, सो दैट इज द बॉटम एंट्री इम्पेलर्स। एंड इफ विल टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ CSTR, it's very simple. As you have understand the design of CSTR, you will definitely understand the working of CSTR. In this continuously nutrients are being added and there is formation of the product. यहाँ पर steady state maintain की गई है between the reactants and the product. So yes, this is just the overall mechanism and working of CSTR की nutrients add किए जाते हैं, और from the inlet nutrients are being added and from the outlet the product is been removed, and after that the downstream processing is been done. Downstream processing it is the recovery process, मतलब यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है उसे प्यूरिफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है depending on the conditions which are required for that product. So yes, this is overall about the CSTR, the design and the working process of the CSTR. अगर इसके एडवांटेज देखे जाए CSTR के, तो इसका मेन एडवांटेज है कि ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है, सो इट सेव्स द टाइम। ओके, सो इट इज द कंटिन्यूस ऑपरेशन प्लस द
टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऑफ द CSTR इज वेरी गुड. यहाँ पर रेगुलेशन जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है वो कम रिक्वायर्ड है. ओके, इट इज़ द गुड कंट्रोल सिस्टम एंड द कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल. डेफिनाइट है कि बॉटम टाइप ऑफ इम्पेलर ही यूज़ करने हैं, मैकेनिकल एजुटेशन ही यूज़ करना है. ओके, सो दिस ऑल द थिंग्स आर बीन फिक्स्ड. 2 और 6 ब्लेड्स आर बीन यूज, मीन्स 2 और 6 जो इम्पेलर को ब्लेड्स कनेक्टेड है वो 2 या 6 काउंट में ही मेजर प्रेजेंट है. सो द number and the design is been fixed, so the simple there is simplicity in the construction. अगर इसके एप्लीकेशंस देखे जाए, एप्लीकेशंस ऑफ CSTR, इट इज मेनली यूज्ड फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्लस इट इज यूज्ड फॉर द परफेक्ट मिक्सिंग ऑफ द केमिकल्स. ये केमिकल रिएक्टर है, so it is used for perfect mixing of the reactor, and it's mainly used in the industrial processing, means at the large scale. So this was overall view about the CSTR, the design, the working, applications and advantages of CSTR. Thank you.